Hello everyone. Today we will discuss about some important points which are important and generally is asked in the exam. So, as a revision we will focus on such points. Before going to start, I want to inform you that in first assessment test already we have taken chapter number 1, and for second assessment course it will be course will be chapter number 2 and 3. Fine. Again I am repeating, chapter number 2 and 3 will be asked as in the course of the second assessment test. Next thing that I want to discuss with you, that is some points which we are going to discuss that are the very much important on the basis of the exam. So let's start without wasting time. First point that we are going to discuss from chapter number 2, that is what are the main steps of the nutrition in humans, right? As the chapter name is nutrition in animals, chapter number 2. So first important related, what are the main steps of nutrition in humans? So that are, first we can say food digestion process start from ingestion, right? Ingestion, it means whenever we are keeping food, any kind of food in our mouth, that process is called ingestion, that we already discussed. So it start from ingestion, ends at egestion, right? So first point ingestion, second digestion, third absorption, fourth point we have discussed assimilation, it means egestion, right? So these are the points which are very much helpful in digestive system in human or in animals, isn't it? Second point that is very much important, that generally asked from this topic, about stomach. The stomach release, whenever digestion process is going to complete in our body, the stomach's role is very much important, है ना, क्योंकि स्टमक ही ऐसा पार्ट है जहाँ पे डाइजेशन का मैक्सिमम पार्ट कवर होता है, राइट? तो स्टमक से क्या रिलीज होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, दीज आर रिलीजेस टू डाइजेस्ट आवर food. So we can say stomach releases hydrochloric acid and digestive juice which act on food, which are helpful in digestion process, right? Next thing which I want to discuss, what are villi? What are villi? First of all, I want to ask you, if you have remember, that where are villi located? Villi are located in small intestine, right? Villi are located in small intestine. Very much important topic. Generally 2 marks question is asked from this topic. So what are villi? Villi are फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वी कैन से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कहाँ पे होता है? वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. द विलाई, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन in the inner wall of the small intestine is called villi. ठीक है, these are found in small intestine. So if the question is asked where are these found, so they are found in small intestine. And what is their structure look like? Its structure look like finger like projection, isn't it? Second thing, and or if any function is asked, what are the functions of villi? So we can say villi increases the surface area of the absorption of the digested food. It means whatever the food we have intake, we have ingestion in our mouth, that food उसका अगर हमने ज़्यादा क्वांटिटी में उसको एब्जॉर्व कर लिया है तो हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया को वो इंक्रीज़ करती है ताकि वो फूड जो डाइजेस्ट हुआ उसको होल्डिंग करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो सके, ठीक है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेयर इज बाइल प्रोड्यूस्ड? वेयर इज बाइल प्रोड्यूस्ड? ओके, so we can say bile is one kind of digestive juice. What is that? Bile is digestive juice that is produced in liver. Bile is produced in liver. The bile juice is stored in a sac called the gall bladder. It means प्रोड्यूस कहाँ पे हो रहा है? लिवर में, लेकिन उसको स्टोर करने का काम कौन सा बॉडी पार्ट कर रहा है? गाल ब्लेडर. ओके, गाल ब्लेडर इज द
region where bile juice is stored and bile is produced in the liver. Okay, second thing we can say fat it helps in the digestion of the fats. कौन हेल्प कर रहा है? बाइल जूस जो लीवर में प्रोड्यूस हो रहा है, इट हेल्प्स इन द फैट, इट हेल्प इन द डाइजेस्टिंग इन द फैट. बट फैट का कंप्लीटली डाइजेशन अगर पूछे कहाँ पे होता है, सो दैट पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. Fat is completely digested in small intestine. Fat is completely digested in small intestine. Second, if we talk about water का digestion, it means water from undigested food is absorbed mainly in the large intestine. It means maximum जो प्रोसेस है डाइजेशन का कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. लेकिन जैसे डाइजेशन का डाइजेस्ट फूड वहाँ पे स्टोर हुआ, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है? लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम एब्जॉर्ब्ड फूड. ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब हुआ है ना, उसमें से क्या करता है फूड? लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एंड सॉल्ट को अनडाइजेस्ट फूड से एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, डाइजेस्टेड फूड का प्रोसेस हुआ कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में. उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड था कहाँ पे कैरी ऑन हुआ? लार्ज इंटेस्टाइन में. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स from undigested food, and then it will move undigested food through the anus out from our body, isn't it? Next point, if we talk about animals, little bit briefing we are going to give, because chapter 1 we have already completed regarding what are the autotrophs and heterotrophs. Autotrophs are only plants are comes in the category of the autotroph because they are only the organism which are able to make their food. But here if the question is asked, if animals are autotroph, if animals can become in the category of autotroph, so our answer should be no. एनिमल्स अपना फूड अपने आप नहीं बना पा रहे हैं. एनिमल्स आर नॉट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द ऑटोट्रॉफ्स. ओनली प्लांट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ऑटोट्रॉफ्स. एनिमल्स कैन बी पैरासाइट, कैन बी एनिमल्स, कैन बी सेप्रोट्रॉफ्स, एनिमल कैन बी होलोजोइक. ठीक है, एनिमल्स कैन बी पैरासिटिक, सेप्रोट्रॉफिक, होलोजिटिक. ठीक है, इन 3 टाइप में से एनिमल की कैटेगरी कोई भी हो सकती है, बट एनिमल्स नेवर बी ऑटोट्रॉप्स. अब पैरासिटिक, सेप्रोट्रॉप्स तो आपको ध्यान में होगा ना. पैरासिटिक मीन्स फीड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, सेप्रोट्रॉप्स लाइक organism which are feed on dead and decaying matters, and holozoic again depend on other insects and other organism. So these 3 category can be by categorized by the animals, but animals cannot be, never be autotrophs. Next thing, ruminants. I want to discuss about ruminants. What is rumination and what is ruminants? So here one question is there, what do you mean by rumination? So first of all you should know what is the ruminant. Okay, the animals, only there are such few animals which can digest cellulose. Only very few animals that can be digest cellulose. For example cow, है ना. cow एक ऐसा एनिमल है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पा रहा है. अब आ जाइए अपनी प्रोसीजर र्यूमिनेशन. इन र्यूमिनेशन लाइक काउ एंड बफेलो दे द पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल र्यूमिनेंट्स एनिमल्स कौन से हैं? लाइक काउ एंड बफेलो, जो जनरली अपने फूड को पहले सोलो कर जाती है, फूड बॉडी में एक पार्ट में स्टोर किया जाता है, ऑन दैट वापस अगेन उस फूड को जो पार्शली च्यू किया गया है वो अगेन उस फूड को बाहर निकालते हैं और अगेन धीरे धीरे उसको च्यू करके वे ईट करते हैं, है ना. सो दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड rumination. So we can say the rumination like cow and buffalo, they partially digested food is called curd. It is stored in rumen. I already talked about the animals which are ruminants. They have 4 stomachs. They have 4 stomachs. So in first stomach like rumen में वो food पहले store हो जाता है, again they back the food out, that is called curd. Okay, the curd returns back to mouth from rumen in small lumps.
an animal chew it, this process is called rumination. So the ruminants are the animals. Ruminants are the animals who can digest the cellulose. And what is cellulose? It is form of carbohydrate. Again I am repeating. So the ruminants are the only animals who can digest, who have the capacity to digest the cellulose, which we don't have, है ना. एनिमल अनदर एनिमल्स में और ह्यूमंस में वो कैपेसिटी नहीं होती, वो एबिलिटी नहीं होती कि हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाएँ. बट ruminants animals have only the capacity of digest of the cellulose. And what is cellulose? Cellulose, it is the form of carbohydrates. It is the form of carbohydrate. Okay, next the topic we have to discuss about, wait for a while, what is the another important topic? Okay, amoeba. What is explain the digestion in amoeba? So amoeba is a microscopic unicellular organism. We have talked about already. We people are multicellular organism, है ना. बहुत सारे animals and including we people all are comes in the category of multicellular organism. But amoeba is the only animal who comes in unicellular organism. Generally it found in the near pond water. It has one or more finger like projection called pseudopodia, है ना. उसकी बॉडी में एक या एक से ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड pseudopodia, और वी कैन से इट इज़ false feet. Or what is the work of the false feet? It is helpful them to movement from one place to another and for capturing of the food. What is the work of the pseudopodia or false feet? It is helpful to move from one place to another, and second thing, it is helpful to capturing of the food. So amoeba feeds on some microscopic organism. When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particles. क्या करता है, अपने pseudopodia वाला जो पार्ट है उसको वो okay, this is the figure of this amoeba. So what is the amoeba doing? Amoeba, it pushes out pseudopodia. यहाँ पे आपको pseudopodia फिगर में दिख रहा है ना. pseudopodia के थ्रू अपने pseudopodia को pushes out करता है ताकि वो अपने फूड को कैप्चर कर पाए, है ना. फूड पार्टिकल इंजेक्शन दैट वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. व्हाट इज इंजेक्शन? फूड पार्टिकल्स को बॉडी के फर्स्ट पार्ट तक पहुंचाना, दैट इज इंजेक्शन. सो इंजेक्शन फूड पार्टिकल्स को pseudopodia के थ्रू बॉडी के अंदर पुश किया जाता है और engulf it. The food becomes trapped in a food vacuole. Now where does food go? Food go in food vacuole. So we can say generally food vacuole is the part of the amoeba where food is engulfed. Digestive juices are secreted in vacuole, है ना. They act on a food and break it down into simpler substance. Where it is digestion process is over in the amoeba in food vacuole. They act on the food and break it down into simpler substance. अब धीरे धीरे उनका फूड को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाएगा बाय डाइजेस्टिव जूस रिलीजिंग डाइजेस्टिव जूसेस. ग्रेजुअली डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब. द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ. अब ये जो उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब सब्सटेंस वो उसका क्या यूज़ होगा? इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन. Okay, as we talked about, it is a unicellular organism. So उसका मल्टीप्लिकेशन भी इसी बात में हेल्प कर रहा है. द अनडाइजेस्टेड फूड एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल. अगेन वी कैन से फूड वैक्यूल आर द ओनली पार्ट ऑफ द अमोइबा वेयर फूड इज स्टोर्ड, एंड एक्सपेल का काम भी फूड वैक्यूल्स के थ्रू ही अमोइबा की बॉडी से होता है. So here main topics we also almost completed by this video lecture. So till today it is enough, right? And you all have to listen carefully all the video lectures, because now onwards all video lectures will come in the as a revision session. Okay, so hope so you all have understood. Take care. Goodbye.